Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with the topic first. Today is 3rd of July. The first topic is Center to impose limit on stocking of the pulses amid the price rise. Government has come up with the regulation. Second, India sees consensus on OECD G20 global tax deal. We understand that what are the demands from the countries. Third, pandemic increased vulnerability to human trafficking, a report by US Internal Department. Second last, US troops to leave Afghanistan and ending its operation. See, understand the news this as well. And the last is rural power solutions, even other states can emulate. So this is an editorial from Hindu that talks about how the Rajasthan electricity department is working for the better sustainability of the entire state. Apart from all the news discussion, there would be some MCQs questions. These questions would be based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examination. So stay tuned till end of this video so that you could practice some important questions. And those of you who are new to channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. We'll start our session with the first news, that is Center to impose a limit on stockpiling of the pulses. Relevant for your general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sector. We'll understand the detail of this news, what actually the government has decided. Now the news talk about the government decision that the central government has decided to prevent the hoarding. जो भी hoarding की जा रही है, जो stock piles की जा रही है pulses को, उसको रोका गया है with this rules, and government will check the prices of the pulses, right? So they have imposed some limit on the pulses except one pulse, that is moong, right? So these pulse has been exempted. तो होलसेलर्स, रिटेलर्स और जो इम्पोर्टर्स होंगे, जो मिलर्स हैं, उनके लिए एक डेडलाइन, एक कैटेगरी सेट की गई है कि कितने वो स्टॉक कर सकते हैं till October 2021. We know that amid COVID-19 there was a mismatch in the supply, and again the rise in the fuel prices has also shown the price of the pulses and mustard, right? We've seen the oil prices also increasing. So the union government has directed the state to impose the stocks limits. क्या क्या stocks हैं wholesaler, retailers और importers पे? I'll tell you detail about that. So what was the rule that was amended, and the new rule says, which is coming from the Department of Consumer Affairs, उन्होंने कहा है कि जो issues की गई थी removal for license requirement, stock limits, movement restrictions, specified foods tax amendment order 2021, उसके हिसाब से उसको immediate effect से लगाने की बात की गई है. So with all immediate effect, this would be imposed in all states in India, pan India. और स्टॉक्स की लिमिट की अगर बात करें, सो 200 टन हैज बीन अलाउड फॉर द होलसेलर, राइट? इससे ज़्यादा वो एक वैरायटी के पल्सेस को होल्ड नहीं कर पाएंगे, राइट? एंड दे डू नॉट होल्ड मोर देन 200 टन ऑफ वन वैरायटी ऑफ द पल्सेस. इफ यू टॉक अबाउट द रिटेलर कैटेगरीज, उनके लिए जो लिमिट की गई है पर पल्सेस, दैट इज 5 टन, नॉट मोर देन दैट. नाउ इन केस ऑफ मिलर्स, राइट, यहाँ पे जो स्टॉक्स हैं बेसिकली उनके जो लास्ट 3 मंथ्स की जो प्रोडक्शंस होगी, उनके 25% वो एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे रख सकते हैं, विच एवर इज हायर, राइट? एंड फॉर इम्पोर्टर द सेम रूल विल बी एप्लीकेबल विच इज एप्लीकेबल फॉर द होलसेलर्स, राइट? सो जो होलसेलर पे एप्लीकेबल्स है 200 टन की, वो इम्पोर्टर्स पे भी एप्लीकेबल्स होंगे. नाउ डिक्लेरेशन ओवर द स्टॉक लिमिट्स, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक्स हैं, इफ यू हैव ना प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर है, नाउ दिस कैन बी डिक्लेयर इन द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि बता सकते हैं. अपने 30 डेज का टाइम दिया गया, विद इन 3 days दे कैन प्रिस्क्राइब एंड दे कैन से दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ डिटेल्स दे हैव, द एक्सेस लिमिट विच सो एवर इज, चाहे वो होलसेलर हो या रिटेलर हो, वो अपनी डिक्लेरेशन वेबसाइट्स पे बता सकते हैं ऑनलाइन. Now, coming to the other news, India sees consensus on OECD G20 global tax deal. Important for your general studies paper 2, bilateral regional grouping agreements.
सो OECD अगेन एन इम्पॉर्टेंट फोरम, आप इसके बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, G20 के बारे में भी फैक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Now, a day after joining OECD G20 framework, जो global minimum tax की बात की गई थी, 50% has been set as a global minimum taxes, right? तो finance minister ने कहा एक significant issue including the profit allocations जो हो गई है subject to tax rule के, उसको address करने की ज़रूरत है और एक consensus की ज़रूरत है in all the member countries of G20, right? And it is being expected कि ये जो consensus है वो अक्टूबर तक मान ली जाएगी। सो रिसेंटली 130 कंट्रीज हैं जिन्होंने एग्री किया है टू ओवरहॉल द ग्लोबल नॉर्म्स, जो ग्लोबल टैक्स नॉर्म्स हैं उनको, टू इंश्योर मल्टी नेशनलिज्म एंड पे टैक्सेस विच एवर दे ऑपरेट विद अ मिनिमम ऑफ 15%. I think we have discussed G20 and minimum taxes that was being finalized by the OECD and G20 countries. If you have not watched that video, do check it out in our playlist section. Now, the solution should be to the allocation of meaningful and sustainable revenues. जो market jurisdictions है उसको देखते हुए जो developing countries है या जो emerging economies है उसको इससे मदद मिले, so that a minimum tax would be imposed, और जो deadline रखी गई है consensus agreement के लिए, that is by October 2021. Now, they have suggested two pillars. These two pillars are very important if you're writing in mains paper. This has become very relevant. बाद में आपको मैं एक infograph भी दिखाऊंगा. So the majority of OECD and G20 inclusive framework, जिसमें base erosion and shifting members के बारे में बताई गई है. So BEPS के बारे में UPSC ने already 2016 में questions पूछे हुए हैं. बेस्ड इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आए हुए. सो ये कहती है टू अडॉप्ट अ स्टेटमेंट दैट कंटेन एन आउटलाइन कंसेंसस, राइट, जो कि यहाँ पे सॉल्यूशंस हो टू एड्रेस द टैक्स चैलेंजेस और जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है उसके तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए. दिस इज द फर्स्ट पिलर. No, basically these are the major part that has been considered. Now coming to the pillars, दो pillars बताए गए हैं. The first pillar is reallocation of additional share of the profit, right? So reallocation की जाने की जरूरत है additional share of profit जो market jurisdiction के अंदर हो. और जो second pillar है that called for regarding minimum tax subject to tax rules, right? So these two pillars are important. You can see this in infograph. ये जो दो पिलर मैंने आपको बताया. First is fairer distribution of multinational companies' profit and local taxing rights. So this is the first pillar. Second is corporate tax floor rate proposed at 15%. Right? तो ये जो global tax deal है 130 countries हैं jurisdiction to join OECD and G20 tax agreements. Now अगर बात करें equalization levy की ना, जो equalization levy है उसके बारे में इम्पोज की गई थी बाय इंडिया विच विल हैव टू बी रोल बैक, राइट. नाउ अगर मिनिमम टैक्स आ रही G20 की में जो 15% की रखी गई है, नाउ इक्वलाइजेशन टैक्स को हटा दिया जाएगा. नाउ इंडिया विल नीड टू इवेल्युएट टैक्स अंडर द न्यू रिजीम अगेंस्ट द इक्वलाइजेशन कलेक्शंस, राइट. और जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री है दे हैव कॉल्ड फॉर अ मीनिंगफुल एंड सस्टेनेबल रेवेन्यू टू लोकल मार्केट. सो इंडिया इज मोर कंसर्न on the sustainability of revenues to the local market. Now coming to the other news, pandemic increased vulnerability to human trafficking. This is important for your general studies paper 2. Vulnerable section of the population, and even you can quote somewhere in the reports if you're writing essay. This can be again something which is very important for you. Now according to the ट्रैफिक इन पर्सन रिपोर्ट 2021, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट रिलीज करती है. उन्होंने कहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद कुछ ऐसे आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट हुए हैं जहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है. सो दिस सिचुएशन हैज़ इग्निशिएटेड और इग्नाइटेड द लेवल ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विच वॉज हैपनिंग बिफोर. सो द स्टेट डिपार्टमेंट इन दिस रिपोर्ट हैज सेड कि कुछ ऐसे कंट्रीज हैं तो डाउनग्रेडेड सेवरल कंट्रीज एंड अपग्रेडेड अदर्स फॉर देयर एफर्ट टू कम्बाट द सोर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग. और ये रिपोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू इंडिया बट वी आर मोर टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, दैट दे हैव डाइवर्टेड देयर रिसोर्सेज टुवर्ड पेंडेमिक एंड ऑफन expensive of anti-trafficking efforts. So definitely these when the people were more concerned into working towards the pandemic, some of the group, some ideal environment that was created for the human trafficking.
Now the pandemic resulted in an increase in vulnerability, right? Pandemic में खास करके vulnerability की बात करें, human trafficking की, uninterrupted existing anti-traffic efforts was also being done. So they have basically tried to focuses upon कि इस तरह से कोविड के टाइम में जहाँ पे पूरी नेशन जो गवर्नमेंट है दैट इज फोकसिंग अपॉन कर्बिंग दिस अ स्विफ्ट बेसिकली जो एंटी ट्रैफिकिंग एफर्ट्स हैं उनके तरफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है. Now, ranking of the countries की गई है. So the report rank countries on the basis of their compliances. अगर बात करें जो Traffic Victim Protection Act है TVPA 2000. This is a rule which is there. It can be a factual question in the prelims also. Now 6 countries were downgraded. Tier level पे इनको रखी गई है. For tier 1, the highest ranking to tier 2 shift कर दी गई. That is Cyprus, Israel, New Zealand, Norway, Portugal and Switzerland. Right now for other countries like tier 2 countries की बात करें, they do not fully meet the TVPM, but जो minimum standard है उसमें ranking significant efforts to themselves into the compliances, right? जो compliances कर रहे हैं उस countries को category wise category 1 और category 2 में रखी गई है. Now 2 nations, that is Guinea Bissau and Malaysia, were added in tier 3 list for the worst offenders, right? ये लिस्ट में और भी बहुत सारे कंट्रीज है दैट इंक्लूड अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बर्मा, चाइना. ये बहुत सारे कंट्रीज है. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन रीड इट आउट द एंटायर कंट्री. तुर्कमेनिस्तान एंड वेनेजुएला. यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, दे मे रिस्ट्रिक्ट फॉरेन असिस्टेंस टू टियर 3 नेशन सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल. जो कंट्रीज टियर 3 में है उनको यूएस अपनी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है वो पूरी तरह से रोक सकती है, पूरी तरह से स्टॉप कर सकती है. But the only prerogative is of president approval. If president want in a special condition, then only the financial assistance can be given to these countries. Right? Now, India's performance की बात करें, India की क्या performance रही है trafficking को लेकर के. So the report says that while it did not meet the minimum standard, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है. We have been not performing well here to eliminate the trafficking, and government was making significant effort, although they were inadequate, especially when it's come to the bonded labor. Child labor, bonded labor is again a big concern in India. And for India, the report says that the government is not meeting the minimum standard. जो minimum standard है ट्रैफिकिंग को एलिमिनेट करने के लिए वो बहुत हद तक इंडिया इसको एफर्टली नहीं कर रही है. एंड डेफिनेटली वी नीड टू वर्क अपॉन इट सो दैट जो ग्लोबल लेवल पे हमारी रिकॉग्निशंस हैं बॉन्डेड लेबर को लेकर के वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में है. एंड इट शुड बी शोन दैट इंडिया इज वर्किंग प्रोसेसिवली टू वर्क टू कर्ब द बॉन्डेड लेबर. Now, US troops to leave Afghanistan and end operations. This is important for your general studies paper 2. Effect of policies and politics of developed and developing countries. So we know that US forces are leaving the Afghanistan. तो US troops ने कहा है कि उनके साथ वो US troops और Western allies they would be departing from US military base, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे पिछले 20 साल से US ने military base बनाया हुआ है because of the attack that took place in United States, right, by the Al-Qaeda. सो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स थी अफगानिस्तान में और इसको यूएस ख़त्म कर रहा है. नाटो के फोर्सेस को वापस बुलाया जा रहा है. जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, राइट, विच कंटिन्यूड फॉर 2 decades मीन्स 20 years. It continued for 20 years. Now it's a time that US forces would be leaving Afghanistan by September. कुछ forces around 500 or 1000 forces would still remain, but many of the forces would be leaving that areas, right? Now Bagram airfield है वहाँ पे that acted as a main base for the US forces, right? So Bagram की बात करें तो US services member ने इस airfield को use किया था and it was used for as a battlefield and presidential administration, right? Bagram airfield की बात करें, this name is important, this can be asked in examination, which was key to US war against Al-Qaeda. और यहाँ से ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करते थे. Now exit Bagram airfield. US has said that they would be leaving this airfield, and Afghanistan National Security and Defense Forces in its entity that they said that they would take this area, right? So finally handover की जा रही है. Nearly 20 years तक US ने इस airfield को utilize किया. This was the epicenter
विद द वॉर इन तालिबान, जहाँ पे अलकायदा के जो परपिटेटर्स थे 1911 टेररिस्ट अटैक के, उसको अमेरिका ने बहुत हद तक कंट्रोल किया. नाउ सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, but there's another concern rising in the Taliban, and India is also more concerned about this reason. So the US exit was completed quickly enough to some looters managed to get into the base, but उनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया. जैसे भी जब यूएस के फोर्सेस लीव कर रहे हैं, सब एक इंटरनल फोर्सेस आर कमिंग इनटू एक्शन, बट यूएस वांट कि कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप्स है या फिर जो एक रिस्पॉन्सिबल पावर है उनको ही वापस ये दिया जाए. राइट. Now coming to the editorial from the Hindu, rural power solution event to the states can emulate. Important for your general studies paper 2, functions and responsibility of union and state. So what are the important point in this editorial that I'm going to discuss with you? Let's see that. So some of the important topics under this editorial include 6 topics. First is solution that other state can emulate, advantages of the public school electrification, clean energy drive, राजस्थान की जो टारगेट है 30 गीगावाट्स एनर्जी के, उसके बारे में समझेंगे. रूफटॉप पैनल्स की बात की गई है, कैसे ये हेल्प कर सकती है, एंड वर्किंग टुगेदर कैन डेफिनेटली हेल्प इन अ ओवरऑल सॉल्यूशन. नाउ थीम क्या है इस एडिटोरियल के, किस चीज के बारे में फोकस की गई है पूरे एडिटोरियल में, दैट टॉक्स अबाउट राजस्थान पावर रेगुलेटर इनेबलिंग एनर्जी एक्सेस बियॉन्ड रूरल होम्स. सो विल अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ दिस एडिटोरियल, जहाँ पे बताई गई है कि एक रीसेंट रूलिंग है राजस्थान पावर रेगुलेटर्स की, जिन्होंने कहा है कि दे नीड टू वर्क बियॉन्ड द रूरल होम्स. रूरल होम्स के अलावा उन्हें काम करने की ज़रूरत है. किस सेक्टर में इसके और ज़्यादा एडवांटेजेस किए जा सकते हैं वो देखने की ज़रूरत है. सो इन पास्ट डिकेड इंडिया हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड ऑन एक्सपैंडिंग द एनर्जी एक्सेस, चाहे वो रूरल एरिया के हो या बेसिकली राजस्थान की बात करें या किसी और स्टेट्स की बात करें. व्हेन यू टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दे आर वर्किंग ग्रेट. सो वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट ये है कि नियरली डबलिंग हुई है इलेक्ट्रिफिकेशन के रूरल हाउसमेट में. एक एस्टिमेटेड रिजल्ट्स है वर्ल्ड बैंक के, वेयर इट सेज in 2010 it was 55%, now in 2020 it is almost 96%. So some positive figure coming from the rural electrification. Now coming to the solutions, किस तरह से जो solution दूसरे states को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. राजस्थान की अगर एग्जाम्पल लें तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, RERC, उन्होंने कहा है कि स्टेट के जो 3 बड़े पावर डिस्कॉम्स हैं, दैट इज जयपुर, अजमेर एंड जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड, उनको सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत है पब्लिक स्कूल्स में. दे नीड टू वर्क ऑन पब्लिक स्कूल बिकॉज पब्लिक स्कूल कैन एक्ट एज अ प्लेस वेयर मेनी थिंग्स कैन बी एक्सप्लोर्ड. कैसे एक्सप्लोर करें आपको आगे बताऊंगा. इट हैज़ अ पोटेंशियल टू इलेक्ट्रीफाई 1500 गवर्नमेंट स्कूल इन द रिमोट स्टेट्स विद रूफटॉप सोलर पैनल, जिसमें टोटल 15 मेगावाट्स तक की पावर जनरेशन की कैपेसिटी रखी गई है. एंड द राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने सजेस्ट किया है कि इंस्टॉलेशन ऑफ बैटरीज टू इंश्योर स्टोरेज ऑफ पावर. Now advantages of public school electrification. I've told you that electrifying school will help in another level of benefits. कैसे? अगर स्कूल में पावर होती है, दिस वुड बेनिफिट सेवरल अदर क्रूशियल इफेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ. अगर गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स की बात करें, पब्लिक स्पेस की बात करें, अभी आपने देखा था जिस तरह से कोविड के टाइम में बहुत सारे स्कूल्स को कोविड सेंटर्स बनाए गए. इफ़ दैट स्कूल वुड हैव एडिक्वेटली इलेक्ट्रीफाइड तो बहुत सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन वहाँ ऑटोमेटिक हो जाती. कई स्टेट्स में फ्लड्स, स्ट्रॉम्स आते हैं, तो उसमें भी वो एक तरह से सेंटर की तरह काम कर सकती है. इवन ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन दैट कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल सेंटर्स, राइट. सो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. स्कूल कुड ऑल्सो एक्सटेंड द पावर सप्लाई टू मिड डे मील. किचन्स हो गए, टॉयलेट्स हैं, मोटराइज्ड वाटर पंप्स हैं, इवन powering fan, lighting classroom. These are the benefits that would be coming up with the electrification of the public schools. Now clean energy drive की बात की गई है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने जो CSR इनिशिएटिव है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आगे बढ़ के लाने की बात की गई है, so that it can be worked on the phase manner and this will reduce the burden of infrastructure development expenses on DISCOM. अगर CSR के हिसाब से काम की जाएगी तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इन इंश्योरिंग द क्लीन एनर्जी, राइट.
So CSR or triple P model is always appreciated. Now राजस्थान की जो टारगेट है 30 गीगावाट सोलर एनर्जी की, सो राजस्थान इज वर्किंग ऑन देयर एम्बिशियस टारगेट एंड दे हैव सेट अ डेडलाइन फॉर 2025. करंटली जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 5 गीगावाट की है. उसका ये मतलब है कि हर साल राजस्थान को 7 गीगावाट ईच ईयर बढ़ाना होगा नेक्स्ट 4 ईयर टू achieve this target. We are in 2021, so the state has left with only 4 years, so 7 gigawatt per year is required, right? So this is how the state need to target and achieve its deadline that they have set. Now rooftop panels की अगर बात करें, this is something which would have again help public buildings की बात की जाए, वहाँ पे rooftop installed की जा सकती है. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, पंचायत ऑफिस हैं, रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स. This can be translated into utilizing the clean energy. Now battery storage की बात करें, these are sustainability of the grid infrastructures. Now जहाँ पे extreme weathers हो, it could be mitigated. इसको climate proofing भी कहते हैं. This can be an important statement in your prelims, right? What is climate proofing? Now working together, this can be a solution, a way forward. डेफिनेटली इस तरह से जब प्रोग्राम्स बनती हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. क्लाइमेट रेजिलिएंट अप्रोच शुड बी देयर, क्लीन एनर्जी शुड बी देयर, एंड लैक ऑफ कन्वर्जेंस की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है. सो देयर नीड टू हैव अ क्लोज कोऑर्डिनेशन सो दैट दे कैन वर्क इन अ पॉजिटिव एंड सस्टेनेबल मैनर. जहाँ तक CSR की बात की जाए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनीज फंड कर सकती है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है या जो कॉस्ट इफेक्टिव फोटोवोल्टिक पैनल्स हैं वो बैटरीज और पैनल्स को प्रोवाइड करा सकती है थ्रू द CSR इनिशिएटिव्स. Now sustaining this new power system would require some unlearning and relearning, but it is not an unimaginable. So this can be done. This is not something which cannot be achieved. This can be achieved, but we need to have a dedication. We need to have a workforce which can implement it at the earliest, right? So this is a working together you can write in the examination. Now moving to the MCQs questions. Before I proceed with the question, just to tell you the answers of yesterday question. For the first question, the correct option is B. For the second question, the correct option is C. Now today's MCQs question. Smart has recently seen in news. You have to choose the correct option, whether it aims to regulate ocean marine sources or for sustainable development, strategic partnership for agreement with IEA, promote transparency in jute sector, liquidity risk monitoring the stock market. So what you have to do, you have to choose the correct option and write that in the comment section down below. Second, with reference to International Energy Agency, consider the following statement. The World Energy Outlook report is being released by IEA annually. India is not associated member of IEA. So what you have to do, again, choose from 4, which among the following is the correct answer, and write that in the comment section down below. And we have launched IAS GAZETTE subscription at affordable price. So you can register for this. I have provided a dedicated link in the video description from where you can register yourself. So do check it out. This was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs questions. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.